RSGP मेमोरियल स्कूल क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 16 RS अग्रवाल। देखें वीडियो, समझे और अपने कॉपी पर नोट करें। भाई प्रशांत सर। Here our question is, ABCD is a parallelogram in which angle A is equal to 110 degrees. Find the measure of each of the angles, angle B, angle C and angle D. So हमें पता है कि adjacent angles का sum एक parallelogram में 180 degrees होता है. So angle A plus angle B will be equal to 180 degrees. और हमें angle A की वैल्यू पता है, वो है 110 degrees plus angle B is equal to 180 degrees. यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल B is equal to 180 degrees minus 110 degrees. तो हमें एंगल B की वैल्यू मिल जाएगी 70 degrees. अब एंगल B और एंगल C भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, सो एंगल B प्लस एंगल C will also be equal to 180 degrees. अब यहाँ पे एंगल B की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, सो 70 degrees प्लस एंगल C will be equal to 180 degrees. यहाँ से अगर हम एंगल C फाइंड करने की ट्राई करें, it will be equal to 180 degrees minus 70 degrees. यहाँ से हमें एंगल C मिल जाएगा 110 degrees. Similarly, एंगल C और एंगल D भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, so एंगल C plus एंगल D will also be equal to 180 degrees. और एंगल C की वैल्यू हमने फाइंड की 110 degrees, तो उसे पुट कर देंगे 110 degrees plus एंगल D will be equal to 180 degrees. यहाँ से हमें एंगल D मिल जाएगा equal to 180 degrees minus 110 degrees. So यहाँ से हमें एंगल D मिल जाएगा equal to 70 degrees, and that's the final answer. Here our question is, two adjacent angles of a parallelogram are equal. What is the measure of each of the angles? So let the angles be x degrees. तो अगर हम दोनों एंगल्स को x डिग्रीज मान लें, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्रीज. तो हमें मिल जाएगा x डिग्रीज प्लस x डिग्रीज is equal to 180 degrees, which is equal to 2x degrees is equal to 180 degrees. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल x is equal to 90 degrees. So इन दोनों एंगल्स की वैल्यू है 90 degrees, and that's the final answer. Here our question is, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of each of its angles. So जो दो एंगल्स हमें गिवन है उनको मान लेते हैं 4x और 5x, और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, so इनका सम होगा 180 डिग्रीज. So we have 4x plus 5x equals to 180 डिग्रीज. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 20. अब अगर हम इस 20 को पुट करें तो हमें मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 into 20 which is equal to 80 degrees. Similarly, 5x is equal to 5 into 20 which is equal to 100 degrees. तो दो एंगल्स जो होंगे वो तो 80 डिग्रीज होंगे और बाकी के दो जो एंगल्स होंगे वो होंगे 100 डिग्रीज.
बिकॉज 80 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो जो 80 के अपोजिट वाला एंगल होगा वो 80 के इक्वल होगा। सो दो अपोजिट एंगल्स 80 और बाकी के दो अपोजिट एंगल्स 100 डिग्रीज हो जाएंगे, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। Here our question is, two adjacent angles of a parallelogram are 3x minus 4 degrees and 3x plus 16 degrees. Find the value of x and hence find the measure of each of its angles. So यहाँ पर हमें दो adjacent angle given है जो कि हैं 3x minus 4 degrees and 3x plus 16 degrees, और जो adjacent angles होते हैं उनका सम होता है 180 degrees. So 3x minus 4 plus 3x plus 16 is equal to 180 degrees. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x plus 12 is equal to 180 degrees. फर्दर सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा 6x is equal to 180 degrees minus 12 degrees. So 6x is equal to 168 degrees. और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 168 divided by 6. So this implies that x is equal to 28. अब हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. So 3x minus 4 will be equal to 3 into 28 minus 4. इसे सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा एक एंगल की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिग्रीज और इसके अपोजिट वाला एंगल भी 80 डिग्रीज ही होगा. सो यहाँ पे दो एंगल की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है एंड बाकी दो एंगल्स जो हैं वो है 3x plus 16. इसमें अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 into 28 plus 16. So this will be equal to 100. So जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स है वो है 80 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज, और इन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों इनके इक्वल ही होंगे. सो दो एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री और दो एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री, एंड दैट्स द फाइनल आंसर. Here our question is, the sum of two opposite angles of a parallelogram is 130 degrees. Find the measure of each of its angles. So अगर हम दोनों एंगल्स को जो अपोजिट एंगल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में उनको x डिग्रीज मान लें, सो हमें मिल जाएगा x डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 130 डिग्रीज. बिकॉज अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सो दोनों एंगल्स की वैल्यू x हो जाएगी. यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 130 डिग्रीज. इसे अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 65 डिग्रीज. सो जो दोनों अपोजिट एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्रीज और 65 डिग्रीज. अब इन दोनों एंगल्स के जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनके साथ इनका रिलेशन होगा कि 65 डिग्रीज प्लस जो एडजेसेंट एंगल है उसको y मान लेते हैं. तो 65 डिग्रीज प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 65 डिग्रीज. सो y विल बी इक्वल टू 115 डिग्रीज, एंड दैट्स द फाइनल आंसर. Here our question is, two sides of a parallelogram are in the ratio 5:3. If its perimeter is 64 centimeter, find the length of its sides. So दोनों साइड्स को मान लेते हैं 5x और 3x. हमें पेरीमीटर की मैंने 64 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into sum of adjacent sides is equal to perimeter which is 64. अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 into 8x
इज इक्वल टू 64। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16x इज इक्वल टू 64। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 16, सो x इज इक्वल टू 4। अब अगर हम x की वैल्यू को पुट करें 5x और 3x में तो हमें मिल जाएगा 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 4, सो इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड के लिए 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 which is equal to 12 centimeter, and that's the final answer. Here our question is, the perimeter of a parallelogram is 140 centimeter. If one of the sides is longer than the other by 10 centimeter, find the length of each of the sides. So if we let the shorter side be x centimeter, then the longer side will be equal to x plus 10 centimeter. So according to the formula of perimeter of a parallelogram, 2 into sum of adjacent sides is equal to the perimeter. So हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो 2 इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 140 माइनस 20, सो 4x इज इक्वल टू 120। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 120/4, सो x इज इक्वल टू 30। अब अगर हम इनको पुट कर दें सो शॉर्टर साइड की वैल्यू तो हो जाएगी x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और जो लॉन्गर साइड है वो है x प्लस 10, सो दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 10 which is equal to 40 centimeter, and that's the final answer. Here our question is, in the adjacent figure, ABCD is a rectangle. If BM and DN are perpendiculars from B and D on AC, prove that triangle BMC is congruent to triangle DNA. And is it true that BM is equal to DN? So in triangle BMC and triangle DNA, इनकी कॉन्ग्रुएंसी चेक कर लेते हैं पहले। सो एंगल DNA is equal to angle BMC because they both are 90 degree. Now angle BCM is equal to angle BAN because they are alternate angles. And finally BC is equal to BA because they are opposite sides of the rectangle. So triangle BMC is congruent to triangle DNA, and yes, BM is equal to DN by CPCT, and that's the final answer. So this
this is a question which says that in the adjacent figure ABCD is a parallelogram. The line segment AE and CF bisects the angle A and C respectively. Show that AE is parallel to CF. Okay, so we have to show AE is parallel to CF. So in this question, we have been provided that ABCD is a parallelogram. So if ABCD is a parallelogram, its opposite sides and opposite angles will be equal. So I'll just mark it what will be equal. So this angle will be equal to this angle, and whole of complete angle A will be equals to complete angle C. Okay, so this information we can use. Therefore, angle A is equals to angle C. So half of angle A is also equals to half of angle C. Okay, so half of angle A is equals to half of angle C. Now, if half of angle A is equals to half of angle C, we can see that these are their half. Why I'm saying that? Because AE and CF are the bisector. The question says that AE is the bisector of angle A, so its half will be these and these angles, and CF is the bisector of angle C, so its half will be these angle. All right. So now what we can do from here is that half of angle A I can write as angle DAE, and half of angle C I can write as angle FCB. So let's take two triangle. So in triangle, suppose say I take ADE and triangle CBF. What I can do, I can conclude that angle DAE is equals to angle FCB. Okay, so DAE is this angle and FCB is this angle, so this angle is equal to this angle. This angle is automatically equals to this angle by the property of parallelogram, and this side AD will be equals to side BC by property of parallelogram. So I can say that AD is equals to BC and angle D is equals to angle B by parallelogram property, and this above thing we have proved above. Alright, so since the corresponding parts are coming equal, so I can say therefore triangle ADE is congruent to triangle CBF. And their corresponding parts will be equal. This also implies that this implies CD is equals to DE, that is equals to AB, and that is equals to BF. So if we look closely, CD was already equals to AB since it was a parallelogram. Now DE and BF are also equal. If DE and BF are equal, so remaining part, that is AF and CE, will also be equal. So I can say from here, this implies EC will be equals to AF. Now these opposite sides are equal. So I can say therefore AECF is a parallelogram, and what we have to prove? We have to prove A is parallel to CF. So AE is parallel to CF, and that will be the answer. Thank you. So this is a question which says that length of diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the length of each of its sides. Okay, so we have to find the length of the sides of the rhombus, and it is given that the length of diagonals is given to us. So diagonal 1 I am representing as 16 centimeter and diagonal 2 I am representing as 12 centimeter. So first of all, let's make a rhombus to have a clarification on this question. Okay, so if I make a rhombus, so let us suppose that this is our rhombus. Okay, so this is our rhombus. So what happens in the rhombus is that its diagonal bisects each other. So its diagonal will bisect each other. So if this is the first diagonal, and if I make another diagonal here, if this is the second diagonal, they will bisect each other at 90 degree. Okay, so I'll name it as ABCD. So if ABCD is our rhombus, so its diagonal will bisect means this part will be equal to this part and this part will be equal to this part.
and they all will bisect at 90 degree. So since they are 16 centimeter and 12 centimeter, so I can split them up, 8 centimeter here, and this one will be 6 centimeter and 6 centimeter here. All right, 8, 8, 16, 6, 6, 12. So, and we know that all the sides of rhombus are equal. So AB will be equals to AD, will be equals to DC, will be equals to BC. So what you can do from here, if ABCD is our required rhombus, so we can take one triangle from it. Let's mark this point as O. This point is O. So in triangle AOP, what we can do, we already know that why it is 90 degree, because it bisects at 90 degree. So in triangle AOB, I can apply the Pythagoras theorem. So AB square equals to AO square plus OB square. Hypotenuse is AB, so we will find AB. AO is, we can see 6. This is 6 square. OB is 8. This is 8 square. Let's find out this. AB squared equals to 36 plus 64. So AB square will be equals to 100. And I will get AB as square root of 10. And this will give me AB as, square root of 100. So this is square root of 100. Now, so AB will come out to be, AB is equals to 10 centimeter. And length of each side will be 10 because all sides are equal. Therefore, length of each side is equals to 10 centimeter, and that will be the answer. Thank you.